Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Forward Public School e-learning class 9th, subject biology, chapter number 6, enzymes, part 1. I am your teacher Seema Samin. Students, unit 6 is started from page number 116 of your book. To write down meaning of difficult terms, you must have pencils in your hands. Students, come to page number 117 of your book. So let's start from introduction of the chapter. The characteristics of living things such as breathing, growth, reproduction and responsiveness to stimuli are the outcome of chemical reactions taking place inside the body of a living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है लाइक ब्रीदिंग, सांस लेना, ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज, रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ या ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई दैट इज रद्द अमल शो करना किसके लिए, स्टिमुलाई के लिए, आर द आउटकम और द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब इन सब प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस. स्टिमुलाई का आप लिखे any external factor which bring change in the internal environment of an organism. The chemical processes that occur within a living organism in order to maintain life are collectively called metabolism. लिविंग बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे लाइफ कंटिन्यू रहती है या मेंटेन रहती है, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. All these reactions are controlled by specific proteins called enzymes. और मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शंस को मेंटेन करने के लिए we have special protein inside our body which are called enzymes. So in this unit we will study enzymes and how they control metabolism. Metabolism, the sum of all chemical reactions going on within a living organism is called metabolism. Metabolism क्या है? The sum or total of all chemical reactions going on within a living organism is called metabolism. Living organism की body में जितने भी chemical reactions हो उनको collectively क्या कहा जाता है? Metabolism. Metabolism have further types that metabolism consists of anabolism and catabolism. मेटाबॉलिज्म को हम 2 स्टेजेस या स्टेप में डिवाइड करते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज बिल्डिंग अप और प्रोडक्शन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वंस. एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं फ्रॉम स्मॉलर वंस. दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शंस. Photosynthesis is a process by which smaller and simple molecules, water and carbon dioxide react to form a larger and complex molecule that is glucose. Come to this one reaction which is an example of anabolism. In the photosynthesis, the smaller and simple molecules, for example carbon dioxide and water, combine in the presence of sunlight and chlorophyll and produce larger or complex molecules that is glucose along with the release of oxygen gas and water also produce. So it is an example of anabolism. Therefore it is an example of anabolism, whereas catabolism is the breakdown of larger molecules into smaller ones. कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और एज अ रिजल्ट क्या बनते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर यूनिट्स. दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शंस. इन रिस्पायरेशन अ लार्जर एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, for example glucose, is broken down into smaller and simple molecules that is carbon dioxide and water. Therefore it is an example of catabolism. In the respiration, complex molecule, for example glucose, broken down with the help of oxygen and change into smaller molecules or simpler molecules that is carbon dioxide and water along with the release of energy. So it is an example of catabolism. So anabolism and catabolism collectively they are called metabolism. Now come towards definition of enzymes, that what are enzymes, how they work, how they
when they discovered. So enzymes are biological catalysts which speed up the chemical reactions within the body without getting consumed or used. ठीक है, enzymes क्या है? Biological catalyst है. Biological means they are concerned with the body of living organisms. They work inside the bodies of living organisms. So enzymes are biological catalysts which speed up, which increase the rate or speed of chemical reactions within the body without getting consumed. खुद यूज नहीं होते लेकिन केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं. अब आप देखें कैटलिस्ट. व्हाट आर कैटलिस्ट्स? तो कैटलिस्ट का आप लिखें. कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स in a rapid way, in a fast way, without being consumed. Catalyst हमारे पास इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, लाइक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं, जो कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कन्वर्ट करेंगे रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट इन अ फास्ट वे, इन अ रैपिड वे, without consuming in the reactant, in the reaction, without becoming part of the product. तो जिस तरह कैटलिस्ट काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, सेम type of activity is done by enzymes. So that is why enzymes are called biological catalysts. The molecules that react in the enzyme catalyzed reactions are called substrates and the molecules produced in the reactions are called products. वो रिएक्शन जिनमें कि एंजाइम यूज़ हो तो जो रिएक्टेंट्स होंगे उनको हम सबस्ट्रेट कहेंगे और जो एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनेंगे दे विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट्स. Point to remember देखें आप. The term enzyme was first of all used by a German physiologist Wilhelm Koch in 1878. Enzyme kick start biochemical reactions. ये enzyme term सबसे पहले एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने यूज़ किया जिनका नाम विल्हेल्म कोच था in 1878. और enzymes kick start biochemical reactions, यानी एंजाइम क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं. बायोकेमिकल रिएक्शंस का आप लिखें. केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और केमिकल रिएक्शंस विच आर existing or taking place inside the body of living organism. Students, in the definition of enzyme we have done that enzymes are biological catalysts which convert reactants into product in a speedy way, or simply enzymes are biological catalysts which speed up the rate of chemical reaction or the speed of chemical reaction without being consumed. Now how enzymes are going to do it? Enzymes lower the activation energy during the reaction. What enzymes do? They lower the activation energy. Now what is activation energy? The minimum amount of energy possessed by the reactants. Activation energy is the minimum amount of energy possessed by the reactants. Whenever a chemical reaction takes place, some amount of energy is spent to break the chemical bonds in the reactants, that is in the substrate. This energy is called activation energy. यानी जब कोई भी रिएक्शन हो रहा हो तो रिएक्टेंट्स जो है दे हैव सम एनर्जी, या जिनको सबस्ट्रेट कहा जा रहा है, और वो एनर्जी स्पेंड होगी और इस तरह उस एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम लोअर्स ऑफ द अमाउंट और द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. जब रिएक्शन में एंजाइम यूज़ हो तो एंजाइम क्या कर देते हैं? दे लोअर द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. Thus, in the presence of enzymes, reaction proceed or take place at a faster rate or speed. Enzymes in many ways to lower the activation energy. Enzyme act in many ways to lower the activation energy. Enzyme बहुत से वे में activation energy को लो करते हैं. ठीक है. For example, they change the shape of the substrate molecules. एक तो एंजाइम क्या करेंगे? They will be bring change in the shape of the substrate or the reactant molecule. Secondly, or bring them in correct orientation, या उनके डायरेक्शन को, उनके स्टाइल को, उनके अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे, रिएक्टेंट्स के अरेंजमेंट को. और they may also disrupt or disturb or change the charge distribution on substrate molecules. तो 3 वे में एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट को लो करते हैं. कैसे? दे चेंज द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट molecule or bring them in correct orientation, or they may also disturb or disrupt
or change the charge distribution on substrate molecule. So let's explain it through a diagram. आप देखिए, here we have a reaction where the glucose and oxygen combine and do production of carbon dioxide and water. Simply it is a reaction of respiration. So we are going to consider it without enzyme and with the help of enzyme. पहले आप देखिए, in the reaction जहाँ पे रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और रिएक्शन हो रहा है विदाउट एंजाइम. रिएक्शन गोइंग टू बी स्टार्टेड विदाउट एंजाइम एंड फाइनली द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो आप देखें, जब ये रिएक्शन हो विदाउट एंजाइम तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यानी कि द रिएक्टेंट विल बी possess टू मच एक्टिवेशन एनर्जी. So they will be taking a longer time to be converted into product, this much time. And जब यही reaction, whenever it is going to be done with enzyme or with the help of enzyme, so just consider it like reactant glucose and oxygen converted into product carbon dioxide and water, activation energy with enzyme. तो आप देखिए, जब reactants की यानी enzyme यूज़ हो तो activation energy कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी. सो इन सच वे ओवरऑल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, ओवरऑल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कम रिलीज होगी और विद एंजाइम इट विल बी टू मच. सो इन सच वे व्हेन एवर एंजाइम यूज, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द reactants and reactants will be converted into product in a very speedy way, or simply enzymes lower the activation energy of the reactants and converting reactant into a product in a very rapid way. Point to remember, आप देखें, complex apparatus and high temperatures are required to break down carbohydrates, fats और proteins in the laboratory. अगर फैट्स की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की जो कि एनर्जी सोर्सेज हैं, इनकी ब्रेकडाउन अगर हमने करनी हो लेबॉर्ट्री में, सो इनके लिए हमें क्या चाहिए, कम्प्लेक्स ऑपरेटर्स, दैट इज़ complete equipment, environment as well as high temperature. However, with the help of enzymes, cell can carry out these reaction quite rapidly without within normal body temperature. लेकिन जब यही breakdown, that is breakdown of carbohydrate, fats और protein हमारी body के अंदर हो, हमारे cells के अंदर हो, तो ये reaction बहुत तेज़ी से in a fast way they are going to be carry out and within a normal body temperature. Students, this was the end of our topic. Next topic of the chapter will be discussed in the next class, that is part 2. Thank you.